Hello future designers, welcome back to our YouTube channel. This is Sugra Fatma, a Nift alumni, and today in this video we'll be discussing about the Nift Eligibility Criteria 2025. So I'll be starting with the bachelor's and then master's. We'll see one by one each one of them. तो गाइज हर साल निफ्ट में 23,000 to 40,000 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं फॉर एडमिशन्स। अगर हम देखें बीडेस के लिए तो बीडेस के लिए आपके पास 12th की डिग्री होना कंपलसरी है, ठीक है। उसी के साथ बीडेस में टोटल 6 स्ट्रीम्स होती हैं। जो पहली स्ट्रीम होती है वो होती है फैशन डिज़ाइन, सेकेंड फैशन कम्युनिकेशन, थर्ड लेदर डिज़ाइन, फोर्थ नेटवेयर डिज़ाइन, फिफ्थ टेक्सटाइल डिज़ाइन, सिक्स एसेसरी डिज़ाइन। और जो दूसरा डिपार्टमेंट होता है बैचलर का वो होता है बीएफ टेक। तो पहले हम देखेंगे बीडेस के लिए जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए होता है, उसके बाद हम देखेंगे बीएफ टेक के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए होता है। सो गाइस, the maximum qualifying age for bachelor degree should be less than 24 years. The students should pass 10+2 pattern of examination from any recognized central state board of secondary examination. But guys, in BF Tech there is one condition that is applied, which is BF Tech के लिए आपके पास physics और मैथ स्ट्रीम होना ज़रूरी है। अगर आपने 12 फिजिक्स या मैथ से किया है तभी आप बीएफ टेक के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि बीडेस में नहीं है। बीडेस में आप किसी भी स्ट्रीम से आओ, बीट बायो, बीट मैथ्स, आप एलिजिबल हो, पर बीएफ टेक में आपको या फिजिक्स या मैथ स्ट्रीम से होना होगा। नाउ गाइस, लेट्स सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मास्टर्स प्रोग्राम। सो फॉर मास्टर्स प्रोग्राम देयर आर 3 different departments, that is Master of Design, Master of Fashion Management and Master of Fashion Technology. Let's see the eligibility criteria, each one of them one by one. For Masters, there is no age limit. For MDes, the educational qualification should be undergraduate degree in any discipline from any institute, university recognized by law in India, or undergraduate diploma of minimum 3 years duration from NIFT or NIT. For MFM, undergraduate degree in any discipline from any institute, university recognized by law in India, or undergraduate degree of minimum 3-year duration from NIFT or NID. Now talking about eligibility criteria for MF Tech, BF Tech degree from National Institute of Fashion Technology NIFT, or BE B Tech from any institute, university recognized by law in India. So guys, here I have discussed eligibility criteria for bachelor's as well as master's program. If you have any doubt regarding these, you can just mention in the comment section, or if you want us to make video on any other topic, just tell us or suggest us in the comment section below. Also, if you want to know anything regarding NID, UCEED or NIFT, you can visit our channel and see our previous video. I hope it might help you. Thank you and see you in the next video.